everyone, welcome to IPMAT by LPT. So guys, this session is going to be very helpful for the people who are confused with the quant syllabus. So we are trying to simplify, decode the syllabus, what actually matters and everything in detail. So many students are confused about the syllabus part, that what topic should they uh, practice, where should they practice from. So in this session, we'll decode it one by one. So let's see what actually IPMAT Quant want from you, right? So first of all, you have to understand actually the quant section. So see, it tests actually both speed and conceptual clarity. Okay. In this exam, you know that I have like approximately 2 minutes per question, even less than that I can spare. तो यहाँ पर मुझे स्पीड के साथ साथ देयर शुड बी अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ऑब्वियसली द स्पीड विल हैम्पर, राइट? यू विल स्टक एट एवरी पॉइंट. तो इट एक्चुअली टेस्ट योर स्पीड एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो दो चीजों पे आपको काम करना है व्हाइल वर्किंग ऑन द आईपीमैट क्वांट सेक्शन, दैट इज द स्पीड एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? इट इंक्लूड्स लाइक मिक्स ऑफ हाई लेवल स्कूल मैथ्स इसमें रहता है एंड अ लिटिल बिट, एंड इसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड रहता है. द प्रॉब्लम्स आर नॉट लाइक जैसे आपके स्कूल लेवल में आते हैं दैट यू जस्ट हैव अ एल्गोरिदम, ठीक है, कि यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल गेट द आंसर. इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ लॉजिक वेर यू हैव टू एट टाइम्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? Problems will appear similar to that you have solved in the school level, but the approach was quite different. Here you have to use your logical skills to get to the conclusion, right? And in this case, the questions often integrate multiple topics. ये चीज, this point is very important, that generally in school level maths we are working on one concept at a time. But in IPMAT, in aptitude exam, what happens that multiple topics are integrated. What does it mean? कि for example आप time and work का question कर रहे हो, right? This, but the question will be such that you have to apply the concept of series, राइट? कि आपको सीरीज एपीजीपी का कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा. तो देर इट इज नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर टॉपिक टाइम एंड वर्क है तो वो सीरीज वाले टॉपिक से तरीके से नहीं सॉल्व हो सकता. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस. तो व्हाट हैपेंस कि मल्टीपल टॉपिक्स आर इंटीग्रेटेड to confuse you. That's why I told her कि conceptual clarity is very important. If you are conceptually strong, then अगर multiple टॉपिक्स इंटीग्रेट भी हो रहे हैं तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इट इजीली, राइट? देन यहाँ पे फोकस शुड बी ऑन द एक्यूरेसी, ठीक है? नॉट ये, इट इज नॉट समथिंग कि आप फॉर्मूलाज करके यू विल बी एबल टू स्कोर इट. नो, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल. यस, फॉर्मूलाज आर हेल्पफुल, बट ओवर द टाइम आपको फोकस करना है एक्यूरेसी, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी इज द की. देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है, तो देयर हैज टू बी एन एक्यूरेसी. तो जब भी आप quant section पे फोकस कर रहे हो, that whatever problem I have taken, try to solve it with full accuracy. Don't go for random guesses, wild guesses. Focus on the accuracy part. Now it comes to, we'll divide it into different parts. First we have the arithmetic, which is the highest weightage, like 30 to 35% of the questions you are getting from here, right? 30 to 35% questions means around 12 to 14 questions, approximately 12-13 questions we can expect from the arithmetic. Now this arithmetic is the part which everybody have done till your 10th standard, right? The topics here are percentages, profit and loss, discounts, marked price, ratios, proportions, partnership, average, mixture, allegations, simple compound interest, time, speed, distance, time and work, mixtures. This includes your arithmetic portion. तो see, directly around 10 to 12 questions आपको यहाँ से directly आने वाले हैं. And these are the topics which are you might find them at the time easier, but at the same time they might be tricky to solve. Okay, because the problems are generally related to real day-to-day life problems are asked in this section. ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. तो a lot of questions have been asked, are being asked from this section, arithmetic. तो my weightage when I am practicing, अपना फोकस किस पे रहना चाहिए? ज्यादा arithmetic पे. यहाँ पे you have to be थोड़ा selective. I know कि ज्यादा weightage यहाँ से आ रहा है, तो I have to
मेक अ कमांड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो दिस इज द एरिथमेटिक पोर्शन। ये एरिथमेटिक पोर्शन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन स्पीड एंड एस्टिमेशन स्किल्स यहाँ पे डेवलप करना है while सॉल्विंग these क्वेश्चंस। तो आपको अपना कैलकुलेशन स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर द टाइम धीरे धीरे कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस है, एस्टिमेशन स्किल्स पे काम करना है। एस्टिमेशन स्किल्स इज बाय यूजिंग द ऑप्शंस बेसिकली। तो आप क्लास में सीखोगे दैट वेयर यू कैन टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यू कैन राउंड ऑफ फिगर्स टू गेट द आंसर्स। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज का टॉपिक रहता है दैट इज एरिथमेटिक। आफ्टर द एरिथमेटिक यू हैव सेकंड इंपॉर्टेंट इज द एल्जेब्रा। अब इट इज द एल्जेब्रा जहां पे द टॉपिक्स लाइक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, these topics are very very important. एल्जेब्रा के अंदर जब आप जाओगे तो एल्जेब्रा में यू डोंट हैव टू गेट इनटू द ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। उसमें यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम। ठीक है, वहां से आईपी मैट इंदौर में स्पेसिफिकली यू विल फाइंड अ 1 or 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन, राइट, एंड नॉट इन रोहतक एंड अदर एग्जाम्स। तो बाकी एग्जाम्स के लिए इफ इट कम्स टू एल्जेब्रा तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड हाईएस्ट वेटेज है एल्जेब्रा का। ठीक है, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, ग्राफ will be there, polynomial and factorization, sequence and series, functions and graphs, ये सारा आपका आ जाएगा इन एल्जेब्रा। दीज टॉपिक्स फॉर द स्टार्टिंग, ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये टॉपिक का जो एप्लीकेशन है इस इन टॉपिक को इट माइट इंटीग्रेट इन द अरिथमेटिक। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो आपको अरिथमेटिक में परसेंटेज के अंदर कहीं पे जाके अप्लाई हो, राइट। तो दैट डज इन आईपीमैट what it does कि it integrate topics algebra arithmetic, it will integrate the different topics in one question. Then third is the number system and logarithm. ठीक है, नंबर सिस्टम एंड logarithm। तो नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम्स, ये चीजों पे अपने को काम करना है। नंबर की प्रॉपर्टीज, फैक्टोरियल्स, बेस सिस्टम, लॉगरिदम, लॉज, एक्सपोनेंशियल कंपैरिजन, है ना। लॉग्स के अंदर आप इंडाइसिस को भी रख सकते हो। तो लॉगरिदम के सारे रूल्स, एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने को वेटेज वाइज रखना है कि हाईएस्ट वेटेज इज ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वेटेज जाता है किसका, एल्जेब्रा का। देन नंबर सिस्टम एंड लॉगरिथम, यहां से आपको 1 to 1 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। When we comes to geometry and mensuration, now this geometry and mensuration is kind of a lengthy part है ना, because it involves a lot of theorems, formulas याद रखने हैं, concepts ध्यान रखने हैं। तो geometry and mensuration a lot many student may find it lengthy। ठीक है, तो इसके लिए you have to like invest some time। ऐसा नहीं है कि you can entirely just skip the topic, that won't be a good deal। So what you can do that start working on the concepts, the formulas, the theorems, धीरे धीरे start making your base। तो यहाँ पे majority of the questions ज्योमेट्री में खास तौर पे triangles and circles dominated रहते हैं। ठीक है, लाइन्स, एंगल्स, तो मेजोरिटी यहाँ पे ट्राइंगल, सर्कल्स जो है वो डोमिनेट करता है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन ज्योमेट्री सेक्शन। मेंसुरेशन के अंदर यू हैव टू डू ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्री का ही एप्लीकेशन दिखेगा आपको। मेंसुरेशन इज नथिंग बट इट इज 3D ज्योमेट्री। ठीक है, फॉर्मूलाज यू हैव टू डू एरियाज के, वॉल्यूम्स के, सरफेस एरियाज के, राइट। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स यू शुड वर्क ऑन। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में अपने को नहीं जाना है, जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियाज, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। ठीक है, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन इज वेरी वेरी important part of it. Then comes the modern maths. ठीक है, now this modern math part it includes permutations and combinations। ठीक है, बहुत in depth में भी अपने को नहीं जाना है मॉडर्न मैथ्स में भी। ठीक है, टू अ लेवल वी विल सॉल्व इट। मॉडर्न मैथ्स करना है, प्रोबेबिलिटी रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लो। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज देखें
So we have arithmetic, the highest priority. Second priority should be my algebra. ठीक है, second highest questions. Then number systems. ठीक है, plus logarithm. Then geometry and then modern maths. ठीक है, modern maths और logical maths. ठीक है, तो इस ऑर्डर में वी हैव टू फोकस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स दे विल टुगेदर मेक अप अराउंड 70% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. Right, 28 to 30 questions are going to be from these sections, जिसमें से alone arithmetic will give you around 12 to 13 questions आराम से arithmetic से आने वाले हैं. Then second highest question algebra, then number system, then geometry, then modern maths, logical quant में you will find 1 2 questions. ठीक है. Then we have a data interpretation है. तो data interpretation का you will find a set. ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन. तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग न्यू, इट इज जस्ट द जो आप अरिथमेटिक में परसेंटेज रेशियोज वगैरह पढ़ोगे उसी का एप्लीकेशन यू विल फाइंड इट हियर. डेटा इंटरप्रिटेशन में तो टेबल ग्राफ चार्ट्स को इंटरप्रेट करना है. सो दिस इज द सिलेबस जो अगर आप इतने पार्ट पे कमांड कर लेते हो तो यू विल बी इजीली लाइक 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज डन हियर, राइट. सो क्या अपना जो स्मार्ट प्रिपरेशन, सी यहाँ पे जो एप्टीट्यूड एग्जाम है अलोंग विद द हार्ड वर्क, इट इज अ गेम ऑफ द स्मार्ट वर्क. ठीक है, सी हार्ड वर्क एवरीबडी इज डूइंग, सो द वन हु इज डूइंग इट स्मार्टली विल गेट अ एज, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्ट्रैटेजी आपका रहना चाहिए कि स्ट्रेंथन योर बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी 8 to 10th. ठीक है, अगर इफ यू गाइज आर फीलिंग दैट यू आर वेरी वेरी वीक इन द दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, तो द एडवाइस विल बी आप एनसीईआरटी उठाओ फ्रॉम 8th to 10th एंड वर्क ऑन द बेसिक्स. तो वहां पर आप इक्वेशंस बनाना सीखोगे. ठीक है, यू विल गेट फेमिलियर विद द टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. उनका आपको वहां पे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा यू आर लिटिल बिट डाउटफुल, टू वर्क ऑन एनसीईआरटी. द बेस्ट सोर्स इज कि आप एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स बनाओ. ठीक है, then daily practice with a timer. अब see, as I told you कि it is the game of speed and accuracy. So you have to train your brain to solve the problems in a time frame. So let us say कि if you have selected 10 problems to solve, ठीक है, या आपके पास एक practice sheet है, तो put a timer along with it and try to beat your time. Let's say कि first time आप 30 minutes में you were able to do only like 10 to 12 questions. So next time try to beat that. So gradually you will be training your brain to solve the questions in a given time frame. And that is the key actually. Right? Revise formulas and pattern types weekly. ठीक है, एक make a rule that कि आप हर हफ्ते make a formula sheet or a copy where all the important formulas or tricks or patterns you have written, go through those formulas like every week. Go through them, right? Then mixed topic wise and mixed test. ठीक है, ये this part is very important कि if you are solving that sectional test, we'll say suppose I'm solving a question paper. ठीक है, तो try to solve the questions from the different topics, because in exam what happens कि first question is from percentage, next will be from geometry, next would be from algebra, so there will be mix and match. तो same you should do while practicing. तो आप topic wise जो है mixed test आप कर लो. That would be a helpful tip, right? Analyze your mistakes, not just scores. ठीक है, जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, analyze your mistakes, where you are making mistakes, right? Don't just see the score कि अगर स्कोर बहुत अच्छा आया है या बहुत बेकार आया, doesn't take it to the heart. बस आप देखो कि what mistakes you have done while solving the mock. Are you able to solve the questions in a time frame? ठीक है, are you lacking in the calculation, ज्यादा time ले रहा है, या there is a particular chapter जिसके questions में आप फंस रहे हो, ठीक है, or a particular concept. Analyze those mistakes and work on those mistakes, right? So it is very important at last that don't understand why it is happening, not just how. Generally, most of the students, what they do, okay, this question is done by these steps, and they just mug up the steps. Don't do that. Just understand why.
right? Because a conceptual clarity will come once you start working on this why this is happening. Ask the questions, right? Why this is happening. So once you are getting the answer of this why, you will your concept will start to be clearing, right? Practice mental calculation daily. So this is very important. Like, you know that you will not be getting the calculators in the exam, right? Calculators तो नहीं है अपने पास. All the calculations you have to do mental. So for that you have to make yourself ready, right? Like on a daily basis, in the morning or before going to bed, take around 5 to 10 problems of multiplication, addition, subtraction, whatever you have to take, and try to do the calculations mentally, right? Squares, cubes, multiplication, two-digit multiplications, that you can practice. So once you practice it, it will become natural, right? Learn the common traps in word problems. ठीक है, तो word problems में आपको कहाँ पे trap करता है? Generally in the language, right? तो उन ट्रैप्स को देखो, वेयर की वो जो ट्रैप्स एग्जामिनर सेट कर रहा है, उन ट्रैप्स को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है? तो देयर आर सम कॉमन ट्रैप्स व्हिच एग्जामिनर यूज, राइट, टू वेस्ट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन ऑल, ठीक है? देन कीप काम ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो गिव इट लाइक यू आर गिविंग अ एक्चुअल टेस्ट, राइट? ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, फोकस ऑन द एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, ठीक है? इनिशियली अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना है. Initially आप भागो एक्यूरेसी के पीछे. That whatever, see, even if I am doing the 5 questions in a section, I try to attain highest accuracy, ठीक है? कि 90 plus percent accuracy रहे. तो if you start running behind accuracy, तो धीरे धीरे number of attempts naturally बढ़ेंगे, ठीक है? बट अगर आप attempts के पीछे भागोगे, ज्यादा करने के पीछे भागोगे initially, तो you will make silly mistakes और accuracy गिर जाएगा, right? तो strategy should be कि focus on accuracy एंड धीरे धीरे अटेम्प्ट्स जो है वो अपने आप नेचुरली बढ़ेंगे, राइट? तो गुड लक विद द आईपी मैट क्वांट प्रिपरेशन. आई होप यू गेट द आइडिया कि व्हाट एक्चुअली सिलेबस इज, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. The syllabus, this much is the syllabus. You have to focus on this and you will definitely do well. Thanks for watching the session. So do like and subscribe the channel and share it with your friends. See you in the next informative session. Bye bye.